Students, in this session we will discuss about the electrical capacitance. So look, first topic, electrical capacitance. Electrical capacitance is defined as the ratio of charge to potential given to the body. So its formula, electrical capacitance is denoted by C. So it is given by C equal to Q upon V, where Q charge, V potential. Its SI unit Farad, Farad, F-A-R-A-D, Farad, in bracket capital F. 1 Farad is equal to 1 Coulomb upon 1 volt. तो देखो बच्चों, आज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस. इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस वो प्रॉपर्टी है बॉडी की जो ये बताती है कि किसी बॉडी में कितना चार्ज स्टोर हो सकता है. इन फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस शोज दैट हाउ मच चार्ज stored in a body when we apply the potential in a body. Some body stored large charge, some body stored some less charge. The property which decide how much charge can be stored in a body at a particular potential, that is called capacitance. Mathematically, capacitance is defined as the ratio of charge to potential, C equal to Q upon V. Now, the device which used to store the charge is called electrical capacitors or condenser. So, electrical capacitor or condenser is the device which used to store the charge. तो बच्चों, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर या कंडेंसर वो डिवाइस है जो हम चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं. नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर? नेक्स्ट टॉपिक, principle of capacitor. Yes. So for capacitor, charge given to the body is directly proportional to potential. When we remove the proportional by proportionality constant, we get a proportionality constant C, where C is called electrical capacitance. Principle of capacitor देखिए, charge given to the body is directly proportional to potential. When we remove the proportional, then we get the proportionality constant. This proportionality constant is called electrical capacitors. Now, next topic, expression for electrical capacitance of spherical capacitor is spherical shell. Expression for electrical capacitance of spherical shell or hollow sphere, hollow charged sphere. Yes. So look, this is the hollow charge sphere which have a radius small r. When we give the charge Q to the spherical shell, then potential at the surface of the spherical shell V equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R. Then capacitance C equal to Q upon V. So C equal to Q upon 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R. Q cancel. So C equal to 4 pi epsilon naught R. This is the expression for capacitance of a hollow charge sphere or spherical shell. There are various type of capacitor: parallel plate capacitor like a hollow charge sphere, or spherical capacitor, cylindrical capacitor. Other various types of capacitor are available, but in our syllabus there is only parallel plate capacitor and capacitance of spherical shell.
वैसे तो बच्चों कैपेसिटर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में एक तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और दूसरा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ होलो स्फेरिकल शेल. होलो स्फेरिकल शेल is not considered as a spherical capacitor. Its spherical capacitor is spherical capacitor, cylindrical capacitor are beyond the syllabus. But if we want to introduce spherical capacitor, just like an introduction, spherical capacitor is the combination of two concentric spherical shells, which we will discuss in higher classes. Now, next topic, electrical capacitance of parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor is just like a combination of two parallel plates which have equal and opposite charge. तो बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दो पैरेलल प्लेट्स का कॉम्बिनेशन है जो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कंटेन कर रही हैं और एक कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे सेपरेटेड है. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड एट ए सम डिस्टेंस अपार्ट एंड हैव ए इक्वल एंड अपोजिट चार्ज. सो देयर इज वेरियस केसेस फॉर स्फेरिकल शेल. सो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. Case first, in the presence of air or vacuum between the plates, look, this is the combination of two. This is the parallel plate capacitor. It is the combination of two parallel plates. With the help of positive charge source, we give the positive charge to this plate. Then, through induction, front other plate attain a negative charge, and back portion of that plate attain a positive charge, and by earthing this positive charge separate from this plate is. So this is the combination of two parallel plates. In between plates there is a air or vacuum. तो बच्चों ये है दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो पैरेलल प्लेट्स का कॉम्बिनेशन है. पॉजिटिव चार्ज सोर्स की सहायता से मैंने इसे पॉजिटिव चार्ज दिया. ये पॉजिटिव चार्ज है. इस प्लेट पे पहले कोई चार्ज नहीं था. चार्ज नहीं था मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है. स्ट्रॉन्ग फोर्स से दोनों चार्ज बाइंडेड है. अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसमें प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर पुल करेगा, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा. तो नेगेटिव चार्ज तो आगे आ गया, पॉजिटिव चार्ज पीछे आ गया. अर्थिंग के थ्रू वो पॉजिटिव चार्ज हमने अर्थ में सेंड कर दिया. तो अब ये सिस्टम कंस्ट्रक्ट हुआ जिसमें ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लेट नेगेटिव चार्ज. दिस सिस्टम इज कॉल्ड parallel plate capacitor, and between the parallel plate capacitor there is air or vacuum. This is the symbol of earthing. This symbol shows that back portion of the plate is earthing, thus an isolated system is formed. Now look, between the plates electric field is E equal to sigma upon epsilon naught, which we have already derived the expression in the previous term. Application of Gauss theorem. And then potential between the plates V equal to E into D. Put the value of E sigma upon epsilon naught into D. So capacitance, so put in place of sigma put Q upon A. So Q into D upon A epsilon naught. In place of sigma we put Q upon A. Then capacitance C equal to Q upon V. So C equal to Q upon C naught.
the symbol of capacitance here we take C naught. C naught equal to Q upon V. So C naught equal to Q upon QD upon A epsilon naught. Q cancel out. So C naught equal to epsilon naught A upon D. This is the capacitance of parallel plate capacitor in the presence of air or vacuum, where A area of plate, epsilon naught is the electrical permittivity of free space between the plates, D is the distance between the plates, and C naught is the capacitance of that parallel plate capacitor in the presence of air or vacuum. Now, so देखो बच्चों, दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में इस समय इक्वल अपोजिट चार्ज है दोनों प्लेट्स पे, बीच में एयर है, वैक्यूम है, वैक्यूम के प्रेजेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. Between the plates, potential V equal to ED. In place of E, we can put sigma upon epsilon naught from equation 1, and then in place of sigma we can put Q upon A. Then capacitance C naught equal to Q upon V. Put the value of V. Simplify. This is the capacitance of parallel plate capacitor. Now case second. Case second. In the presence of dielectric material. In the presence of dielectric material, dielectric material between the plates, dielectric material between the plates. So in between the plates there is a dielectric material, just like a glass, cotton or mica filled between the plates. Whole space between the plates is covered by dielectric material. तो बच्चों, अब इन दो प्लेटों के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिलअप किया है, जैसे गिलास या कॉटन भर दी. इस प्रकार से भरना है कि एयर को रिप्लेस कर दे पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. सो नाउ इन बिटवीन द प्लेट्स डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज फिल्ड whose dielectric constant is K. Then electric field intensity between the plates E equal to sigma upon epsilon naught K. Then potential V equal to sigma upon V equal to ED. In place of E, put sigma upon epsilon naught K. Put sigma equal to Q upon A. Then V equal to QD upon A epsilon naught K. Then capacitance C equal to Q upon V. Now put the value of QV. Put the value of V. Then C equal to Q upon QD upon A epsilon naught K. Q cancel out. Then C equal to K epsilon naught A upon D. This is the capacitance of parallel plate capacitor in the presence of air or in the presence of dielectric material of dielectric constant K filled between the plates. Here K is the dielectric constant of the material filled between the plates. A, D and epsilon naught same as previous article. Now in place of epsilon naught A upon D, this is the equation 2 and this is the equation 3. In equation 3 we can put epsilon naught A upon D equal to C naught. So C equal to K into C naught, where C naught is the capacitance of parallel plate capacitor in the presence of air and C is the capacitance of parallel plate capacitor in the presence of dielectric material. तो देखो बच्चों, इस समय प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फील्ड है, तो कैपेसिटेंस हमारी आ रही है C इक्वल टू, देखिए पूरा आर्टिकल एज इट इज है, बस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू K टाइम्स बढ़ गई जितने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का था. तो आर्टिकल देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, पोटेंशियल V इक्वल टू ED,
एक ई की वैल्यू पुट कर दी, सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी, कैपेसिटेंस नया कैपेसिटेंस सी क्यू अपॉन वी, क्यू की वी की वैल्यू पुट की के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये कैपेसिटेंस आया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की प्रेजेंस में। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हमने जैसे केस फर्स्ट में देखा था, ये किसके इक्वल था, सी नॉट कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो सी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की जगह सी नॉट रख दिया। तो हम देख रहे हैं कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कितने टाइम्स आता है, 8 टाइम्स आता है कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल, केस थर्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब और शीट। यस, सो case third here, in the capacitance of parallel plate capacitor in the presence of dielectric slab or sheet of thickness small t and dielectric constant K placed between the plates of capacitor. So there is a parallel plate capacitor, that plate connected by positive charge source, so that plate attains positive charge and this plate induction through attain negative charge, and there is a earthing. Now in between the parallel plate capacitor we put the dielectric slab, means sheet of insulating material. So you know that in the insulating material each molecule positive and negative charge tightly bounded with each other. Now in the dielectric sheet all molecule net charge is 0, electric positive and negative charge are strongly bonded with each other, but now positive charge plate, due to presence of external electric field generated by positive charge plate and negative charge plate, positive charge pulls the negative charge present in the dielectric slab towards it, and negative charge plate pull the positive charge, because unlike charge attract each other, that's why positive and negative charge exerted a force in opposite direction, so they are slightly shifted and separated. That's why that end negative charge, that end become negative charge and this side become positive charge. In each molecule negative and positive charge separated. This phenomena you know that take place polarization. In previous turn I have explained about the polarization, means to say when dielectric slab placed between the oppositely charged plates, there is a polarization in the dielectric slab take place and negative charge and positive charge separated with each other. तो बच्चों केस थर्ड है कि जब दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी। तो देखिए एक चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, ये प्लेट नेगेटिव चार्ज है, इसके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी, मतलब एक इंसुलेटिंग मटेरियल की स्लैब रखी, जैसे ग्लास की शीट रख दी, कॉटन की शीट रख दी आपने। अब इस शीट में जो हर ईच मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इंसुलेटिंग मटेरियल तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्ट्रांगली फोर्सेस से बाइंडेड है। अब होगा क्या, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट मॉलिक्यूल में प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर पुल करेगी और नेगेटिव चार्ज प्लेट पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर पुल करेगी, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्सर्ट होगा अपोजिट डायरेक्शन में। इससे नेगेटिव चार्ज तो इधर की साइड शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर की साइड शिफ्ट हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे ये एंड नेगेटिवली चार्ज हो गया और ये एंड पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इस फिनोमिना को हमने जैसे प्रीवियस में बताया था क्या कहता है, पोलराइजेशन। So due to polarization inside the slab, negative and positive charge separated. So inside the slab, electric field generated, which is lies in the opposite direction. Inside the direction of electric field is positive to negative. So direction of electric field in that direction, positive to negative inside the slab, and outside the slab in direction of electric field in that direction, positive to negative. Now there is two electric field inside the slab and outside the slab due to these positive and negative charge. Now look, inside the slab there is a positive charge, negative charge separated at a finite distance, so they behave like a parallel plate. Inside the slab negative charge and positive charge separated, which and dielectric constant is of inside the slab is K. So inside the slab expression for electric field intensity is sigma upon epsilon naught K. Why we take sigma upon epsilon naught K? Because it behaves like a parallel plates, distribution of positive and negative charge inside the slab. So potential inside the slab, V slab equal to E slab into T, because distance between positive and negative charge inside the slab is T. So
put the value of E slab sigma upon epsilon naught K. Now the distance between plates is D and space covered by dielectric slab is T. So in how much space air is present? D minus T. देखो बच्चों प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है? T. यानी T स्पेस में तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो बचा कितना पार्ट? D माइनस टी. D माइनस टी एम्प्टी है, मतलब एयर है. तो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड है, तो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. और डिस्टेंस कितनी है एयर में? D माइनस टी. एयर कितने पे स्पेस में सेपरेटेड? D माइनस टी. सो पोटेंशियल V एयर इक्वल टू E air into D minus T. Put the value of E air sigma upon epsilon naught into D minus T. Now between the space of parallel plate capacitors divided into two parts. In D minus T air is present and in T space dielectric slab is present, dielectric material is present. So total space covered by air plus dielectric material. So there is two potential inside between the parallel plate capacitor present inside the slab and outside and in the presence of air. So net potential between the parallel plate capacitor is equal to potential inside the slab plus potential inside the air between the parallel plate capacitor, because potential is a scalar quantity. So we just sum these two potential which is exist between these space of parallel plate capacitor. तो देखो parallel plate capacitor के बीच में स्पेस दो पार्ट में डिवाइड है. T स्पेस में तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब और D माइनस T स्पेस में एयर है. तो जो टोटल पोटेंशियल होगा वो इन दोनों के सम के पोटेंशियल के इक्वल होगा, स्लैब का पोटेंशियल प्लस एयर का पोटेंशियल. सो टोटल पोटेंशियल V एयर प्लस V स्लैब. We put the value of V air from equation 4 and V slab from equation 2. Sigma upon epsilon naught take common. Put the value of sigma Q upon A. This is the potential between the parallel plate capacitor. Then capacitance C equal to Q upon V. Put the value of V. Q cancel out. So C equal to epsilon naught A upon T upon K plus D minus T. Now case fourth. Start. Yes. Now case 4. Capacitance of parallel plate capacitor in the presence of conducting slab. Conducting slab means metallic slab or metallic sheet placed between the plates of parallel plate capacitor. So look, there is a charged parallel plate capacitor. In between them a metallic sheet or conducting sheet of thickness T is placed. For conducting slab dielectric constant is infinite. And inside the conducting slab, E slab electric field is 0. So potential V slab equal to this conducting slab have not a charge. So into T, V slab equal to 0. And outside the slab means inside in air, electric field intensity sigma upon epsilon naught. So potential E air into D minus T. Because in the T space occupied by the conducting slab and how much space occupied by air? D minus T. So potential V air equal to E air into T. Put the value of E air sigma upon epsilon naught. So total potential, sum of these two potential. Put the value of sigma. Then capacitance C equal to Q upon V. Put the value of V, Q cancel. So capacitance in the presence of conducting slab C equal to epsilon naught A upon D minus 2. Yes. So this is the capacitance of parallel plate capacitor in the presence of conducting slab. Look, case 4th can be obtained by case 3rd. In case 3rd, if dielectric slab become conducting, so in the formula of case 3rd, if you put the K infinite, then you could obtain that formula. And in case 2nd, if you put the value of K1, means in place of dielectric slab, if air is present, then K for air value of dielectric constant is 1. So if we put K equal to 1, then we obtain the case first. Means to say case second, from case second we can write case first, because dielectric material is placed by air, then K become 1. And if dielectric slab
replaced. And for case third, from case third we can obtain case fourth, because it, in place of dielectric slab is conducting slab place, then K becomes infinite. Yes. Now next article, expression for electric potential energy and energy density of parallel plate capacitor. So look, next article, expression for potential energy and energy stored between the parallel plates capacitor is yes. Next article, expression for electric potential energy and energy density of a capacitor. Look, when we, let us consider a capacitor of capacitance C. When we give the dq charge to the capacitor, then potential, then work done dW is equal to V into dq. देखिए हमने कंसीडर किया है कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C है, जब हमने उसे dq चार्ज दिया तो कैपेसिटेंस वर्क डन कितना हुआ, dW इक्वल टू V into dq. Put in place of V Q upon C, so Q upon C into dq is equation 1. Equation 2, where we put V equal to Q upon C. Now charge, we give dq charge, then charge increase from 0 to Q, then work done increase from 0 to W. So integrate 0 to W and integrate 0 to Q, Q upon C into dq. So W equal to 1 upon C, take outside the integration, Q into dq integration, Q square upon 2, limit 0 to Q, then W equal to 1 upon 2C bracket Q square minus 0. So W equal to Q square upon 2C. Equation 3. This work done is stored in the form of electric potential energy. So electric potential energy, capital U equal to W. So capital U equal to Q square upon 2C. This is the formula for electric potential energy of parallel plate capacitor. Equation 4. Now put Q equal to CV, then electric potential energy capital U equal to C square V square upon 2C. So electric potential energy U equal to half CV square. Yes, this is equation 5. Now put C equal to Q upon V, then electric potential energy capital U equal to half Q upon V into V square, V cancel, so capital U equal to half, capital U equal to half QV equation 6. Then energy density or energy stored per unit volume in a capacitor. Energy density represented by rho. So rho equal to total energy stored upon volume. देखिए energy density क्या है? Energy stored per unit volume. So total energy stored upon volume
एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला ये हाफ सी वी स्क्वायर और वॉल्यूम देखिए प्लेट ऑफ ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is the combination of two parallel plates. If the area of plate is A and distance between plates is D, then volume can be written as AD. Now for parallel plate capacitor, capacitance C equal to K epsilon naught A upon D, and in case of V, if you put V equal to ED, this is the relation between V, E and D. Simplify that, energy density half K epsilon naught E square. If between the plates air is present, then K replaced by 1, then energy density represented by half epsilon naught E square. So this is the energy density and energy stored in parallel plate capacitor. Now look next article, combination of capacitors. Combination of capacitors. Look next article, combination of capacitors. Combination of capacitor. Just first सीरीज कॉम्बिनेशन. देखो जैसे रेजिस्टेंस हमने 10th में रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ा था सीरीज पैरेलल, वैसे कैपेसिटर भी सीरीज पैरेलल और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. ये देखिए ये दो देयर इज अ 2 पॉइंट्स A and B, between them the battery is connected which have a potential V. It means between the A and B point how much potential difference is V. देखो A और B पॉइंट के बीच में बैटरी कनेक्टेड है V पोटेंशियल की. सो A और B पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, और दो पॉइंट A और B के बीच में 3 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट किए गए. There is a 2 points A and B, in between them a battery is connected of potential difference V. In between A and B 3 capacitors are connected in series. Look, combination of symbol of capacitor is the combination of two parallel plates. So there is a first capacitor, one plate of capacitor is connected with A and another plate connected to C2, another plate of C2 connected with C3, another plate of C3 connected with B. There is 3 capacitors and one plate of capacitor connected with another plate in the form of series. That's why this is called series combination. बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कैपेसिटर की एक प्लेट दूसरे से दूसरे की, तीसरे से तीसरे की, चौथे से ऐसे लास्ट पॉइंट तक कनेक्टेड रहती है. इसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. In series combination, charge remains same because charge given by battery, and from positive charge, from positive terminal, if Q charge start to travel, you know that charge neither created nor destroyed. So from positive charge terminal, if Q charges start to travel, then total charge, negative charge should be reached from at a point negative terminal of battery. So from positive charge, if Q is travel, then in this plate, in this capacitor Q reached, in this capacitor also Q reached, Q, and return back same charge to the this terminal. Charge transfer from in electrostatic induction. That plate become positive, then through induction that plate become negative, and then plate become positive. Then induction this plate become positive and other plate positive, negative. That's through induction one charge transfer from one point plate to another plate and reach at a negative terminal. Now देखिए इन दो पॉइंटों के बीच में हमने 3 कैपेसिटर कनेक्ट किए हैं. चार्ज देखिए बैटरी के बैटरी से टोटल चार्ज Q चला, तो Q इस प्लेट पे पहुंचा पॉजिटिव, तो यानी प्लेट नेगेटिव हो गई. ऐसे एक प्लेट से दूसरी प्लेट को चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा, लेकिन जितना चार्ज है उतना एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर को ट्रांसफर होगा और टोटल चार्ज में आएगा नेगेटिव टर्मिनल पे. तो चार्ज क्या है सेम, बट पोटेंशियल वेरीज. देखिए ये कैपेसिटर इन दो पॉइंटों के बीच में कनेक्ट है, तो माना यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक जाने में एनर्जी कंज्यूमिंग V1, तो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल V1 है. यहाँ से इन दो पॉइंटों के बीच में कैपेसिटर C2 है, यहाँ से यहाँ तक जाने में एनर्जी कंज्यूमिंग V2, तो इन दो पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल V2 और इन दो पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल V3. बट टोटल पोटेंशियल from A to B is V. That's why total potential V can be written as V1 plus V2 plus V3. Now if total charge is Q, which remains same in each capacitor, so in this capacitor charge is Q and capacitance C1. So in place of V1 we can write Q upon C1, in place of V2 we can write Q upon C2, and in place of V3 we can write Q upon C3. And if total capacitance or equivalent capacitance is C, total or equivalent capacitance C means if we remove these 3 capacitors and connected only one capacitor which stores same charge
or but same as these three capacitors take place, then this capacitance is called equivalent capacitance. देखिए कि इन दो पॉइंटों के बीच की इन तीनों कैपेसिटर की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ही है। इक्विवेलेंट का मतलब जो ये तीन कैपेसिटर काम कर रहे हैं वो अकेला एक कैपेसिटर करे, उसे कहेंगे इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जो उन्हीं पॉइंटों के बीच में कनेक्टेड हो। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी है, चार्ज स्टोर्ड क्यू, so in place of V we can write Q upon C. Q take common and cancel out, then equivalent formula for equivalent capacitance 1 upon C equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. Now parallel combination. Now look, parallel combination. Look, there is a 2 points A and B. In between these 2 points a battery is connected. Positive terminal of battery connected with A and negative terminal of battery connected with B, whichever potential B. It means between points A and B, potential difference is B. Now in parallel combination, potential remains same. Potential. So how there is we consider three capacitors of capacitance C1, C2, and C3 connected between A and B. So look how parallel combination take place. There is a first capacitor whose one plate is connected with A and another plate connected with B. Between plates A and B, potential difference is B. So in between plates C1 and C1, potential difference also remain B. Now look, there is another capacitor C2 whose one plate is connected with A and another plate connected with B. Then that have also potential B. And there is another capacitor C3 whose one plate is connected with A and another plate is connected with B. Then between A and B, how much potential? V. So C3 also have potential V. Now in parallel combination, each capacitor parallel combination take place in such a manner: all plates of capacitor connected with one point and another all plates of capacitor connected with another point. Points remain same. Now when charge if total charge given by battery is Q, then Q charge divided into three parts. Some Q1 charge is in C1 and Q2 charge, because there are three paths divided. So Q2 in this and Q3 in this capacitor is transferred. देखिए तीनों कैपेसिटर की हमने पहले कॉम्बिनेशन में देखिए तीनों कैपेसिटर C1, C2, C3 की एक प्लेट A से कनेक्टेड, दूसरी प्लेट B से। अब पोटेंशियल डिफरेंस V है, A और B के बीच में तीनों में कैपेसिटर में पोटेंशियल V रहेगा। अब यहाँ से चार्ज Q चार्ज टोटल चार्ज Q अब यहाँ से ट्रांसफर हुआ, तो यहाँ थ्री पाथ मिले चार्ज को। तो चार्ज कैपेसिटर अपनी कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग चार्ज अपने में स्टोर कर लेगा, यानी चार्ज थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। Q1 इधर चला गया, Q2 इधर, Q3 इधर, फिर Q1 Q2 Q3 टोटल मिले और टोटल चार्ज नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंच गया आपका, क्योंकि चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। जितना चार्ज बैटरी के पॉजिटिव से चल रहा है उतना ही नेगेटिव टर्मिनल पे आएगा। सो देखिए पोटेंशियल तो सब तीनों में सेम है, लेकिन चार्ज वेरीज कर रहा है। सो टोटल चार्ज गिवन बाय बैटरी इज Q and will divide into three parts. So total charge Q equal to Q1 plus Q2 plus Q3. In place of Q1 is the charge stored in C1 has a potential V. So in place of Q1, according to definition, we can write C1V, because C equal to Q upon V. In place of Q2 we can write C2V. In place of Q3 we can write C3V. And if equivalent capacitance is C, then in place of Q we can write CV. V common and cancel, then equivalent capacitance of these three capacitors can be written as C equal to C1 plus C2 plus C3. This is the equivalent capacitance in parallel combination. Yes. Now next article, expression for common potential difference and energy loss in a capacitor. तो बच्चों नेक्स्ट आर्टिकल है कि common potential difference and energy loss in capacitor. So in this article let us consider two capacitors of capacitance C1 and C2. So let us consider two capacitors of capacitance C1 and C2 and have charge Q1 and Q2 and potential V1 and V2. तो दो कैपेसिटर है बच्चों जिनकी कैपेसिटेंस C1 C2 है, वो चार्ज कैपेसिटर है, चार्ज Q1 है और Q2 है दूसरे कैपेसिटर में, पोटेंशियल V1 and V2 है। Now these capacitors joined together with a thin wire, then charge transfer from high potential to low potential, charge redistribute such that
till the potential remain same. देखिए दो कैपेसिटर है, Q1 Q2 चार्ज है, पोटेंशियल V1 V2 है, इन दोनों को आपस में ज्वाइन किया। जब ज्वाइन किया तो चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफर होना शुरू हुआ, तब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या नहीं हो गया, जीरो, यानी दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो गया, सेम। till the both have same potential. Now when they have same potential, then this potential is called common potential. Common potential V equal to total charge upon total capacitance. Total charge Q1 plus Q2 upon total capacitance C1 plus C2. तो देखो बच्चों, जब दोनों कैपेसिटर जब दोनों में सेम पोटेंशियल है तो दोनों कैपेसिटर को हमने एक कॉम्बिनेशन कंसीडर किया है। इन पूरे कॉम्बिनेशन में टोटल चार्ज कितना है इन दोनों का, चार्ज Q1 plus Q2 and total capacitance C1 plus C2. In place of Q1 we can write C1 V1, in place of Q2 we can write C2 V2. This is the common potential. Now both capacitors have same potential. So what is the new charge on C1? Q1 dash equal to C1V, and new charge on C2, Q2 dash equal to C2V. This is the new charge on C1. Now C1 and C2. And initial energy stored means before connecting the capacitor. जब हमने कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट किया, दोनों कैपेसिटर सेपरेट है, तो फर्स्ट कैपेसिटर पोटेंशियल कितना था, V1, तो एनर्जी स्टोर कितनी, हाफ C1 V1 स्क्वायर, दूसरे कैपेसिटर में कितनी, हाफ C2 V2 स्क्वायर। सो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर का टोटल एनर्जी स्टोर। एंड फाइनल एनर्जी स्टोर मींस आफ्टर कनेक्टिंग द कैपेसिटर, both have same potential V. So in place of V1 we take V, and in place of V2 we take V, then V square, when we take V square common, it means final energy stored equal to half C1 plus C2 into V square. तो देखो बच्चों, फाइनल एनर्जी स्टोर मतलब जब दोनों कनेक्ट कर चुके हैं, जब दोनों कनेक्ट कर चुके हैं तो पोटेंशियल तो दोनों भी है, तो सिंपल वे समझने का ये है कि V1 का स्थान किसने लिया, V, और V2 का स्थान भी किसने लिया, V। तो वैसे U2 क्या आएगा, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, हाफ V स्क्वायर कॉमन ले तो हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ V फ्रॉम इक्वेशन 1, C1 प्लस C2, C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2 whole square, C1 plus C2 cancel out, and 1 C1 plus C2 remain. So this is the equation to final energy stored. So final energy loss delta U equal to U1 minus U2. Loss तभी होगा जब इनिशियल वैल्यू ज्यादा होगी, तो U1 minus U2, put the value of U1 and U2, take LCM, multiply them, simplify, take C1 C2 common. This is the formula of A minus B square. So V1 minus V2 square or V2 minus V1 square. Look, this term, this is the formula for energy loss in a capacitor. You can apply direct that formula in numerical. There are in NCERT there are two numericals which can be solved by applying directly this formula. NCERT में हमारे दो numerical है energy loss के, जिसमें हम डायरेक्टली formula इस्तेमाल करके numerical solve कर सकते हैं। देखिए हम एनर्जी लॉस ही क्यों बात करें कि एनर्जी लॉस कैसे प्रूफ हो रहा है, एनर्जी लॉस ही हो रहा है। देखिए V1 माइनस V2 हो या V2 माइनस V1 हो, स्क्वायर है इसलिए हमेशा ये टर्म क्या रहेगी, पॉजिटिव, एंड C1 C2 आल्सो रिमेन पॉजिटिव। दिस होल टर्म ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव साइन बिकॉज V1 माइनस V2 का whole square always remain positive, either V1 less than V2 or V1 greater than V2, because there is a whole square, and C1 C2 always remain positive, means this value always have positive sign. Positive sign means U1 is greater than U2, so there is always energy loss take place. And why this energy loss take place? Because these capacitors are connected with a thin wire, so due to resistance of wire, some energy loss in the form of heat. That's energy loss in a capacitor take place. So these are the articles of capacitors. Thank you.